I will go through what ESMO has to tell. I've just condensed. It is just told us some principles of management. So when you have a hormone positive, HER2 negative, so how do you manage such cases? Here, mainly because they are hormone positive, you will incorporate endocrine therapy. So what is that endocrine therapy bucket that we have, so that we can choose from them is aromatase inhibitors, that is letrozole, anastrozole, exemestane. Then selective estrogen receptor degrader or downregulator, SERDs. So there are two things. One, fulvestrant and elacestrant. It is a estrogen receptor ESR antagonist, I think, or downregulator. And SERMs, tamoxifen. And this is given along with ovarian function suppression, that is LHRH agonist. So in your management, you will use endocrine therapy as your backbone. For this, you will need two information: whether this patient is a de novo metastasis, never had endocrine therapy, or she's recurred with recurrence more than 12 months of starting your endocrine therapy, or after completion of your endocrine therapy. So there are two things. First one is, it is a naive case or sensitive, or it is progressed on endocrine therapy, so it is a resistant case. So accordingly, you will choose your backbone. So what is in this endocrine resistant scenarios? You will still use CDK4 inhibitors, but you will not use your regular AI or your SERMs, because that is what it has been resistant on. So there are biomarkers that will indicate endocrine resistance, and you will not use these as your endocrine backbone. That is point number one. Point number two, it is always given as a combination therapy to start with. What if it progresses following this? Then you have different combinations. So your first line will be endocrine therapy with a CDK4/6 inhibitor backbone with ovarian function suppression, especially in premenopausal. So this is in premenopausal. You will add ovarian chemotherapy, or we have given chemotherapy Now before, and I'll tell you. No, in recurrent setting in a hormone positive patient who are not having visceral crisis, there is no indication for chemotherapy. That I will tell you subsequently. There are two tables which will tell you. See, this says the first time patient here. IM not recurrent. First time metastatic First time patient. also. Yes, if the patient is not in visceral crisis, you will start the patient with endocrine therapy backbone adding CDK4 inhibitors. So this is the thing, standard of care, because this combination has not only shown progression-free survival, there is OS benefit also. Okay. So that is the recent San Antonio update. So standard of care is in ER positive, HER2 negative is CDK4 inhibitor combined with an endocrine agent. It can be anything. When you're giving tamoxifen, you will not give ribociclib because they have got increased thrombosis risk. Now you started this patient on something, then they progressed. Now what to do? Now there is a role for biomarker. You will do certain biomarkers. Genes are BRCA, PALB2, PIK3, ALK, mTOR, and AKT, and ESR. The special mention about ESR is this mutation will tell you endocrine resistance, and in these patients you will resort to give PIK3 inhibitors as well as AKT inhibitors. So next, coming to where is only monotherapy indicated. In second line, when it is progressed on your endocrine backbone therapy, then if you do your biomarker and it comes as germline BRCA positive, then
you have role for monotherapy by PARP inhibitors. Then, what are now your choice of therapy will be biomarker specific targets. So, if you have PIK3 positive, PIK3 positive, so you will give a combination of alpelisib with fulvestrant, or you will give capivasertib. It's a ATK inhibitor with fulvestrant. Next, you got this ESR mutation. This will indicate uh, resistance to aromatase inhibitors. Next, what is the role for chemotherapy? Chemotherapy should be reserved for later lines of therapy when they fail 2 lines of endocrine therapy. Then, when there is visceral crisis. Chemotherapy should be used as sequential single agent. Can be anthracycline in combination or individual with taxane. It is more effective chemotherapeutic agents in breast cancer. So now there is role for antibody drug conjugate like deruxtecan in HER2 low. So in this group also, your HER2 negative can be communicated to be 1 plus or 2 plus negative fish. So in them, there is role for deruxtecan. So all these templates will try to tell you the same. To summarize, first you will start with a endocrine backbone with CDK4 inhibitor. That is the standard of care. And Mona Lisa 2 trial said that there was significant progression-free survival benefit. Then how do you give them? In one chart, they have given you how you can base your first line therapy. You will start the patient on Palbo, Abima or ribociclib. Palbociclib or ribociclib comes as single dose, one tablet, and there is a week off. You give week 1, week 2, week 3, week 4 is off. But abimaciclib is given continuous. Fulvestrant is injectable and it is given alternate weeks along with your ovarian suppression in premenopausal group. So then you have to know side effects of CDK4 inhibitors. See, abimaciclib is associated with GI, that is diarrhea, whereas ribociclib has got deranged LFT, it has got QT prolongation, and there is, along with neutropenia, there is dyselectronemia. So all of the CDK4 inhibitors, you will write hematological associated toxicity like neutropenia, thrombocytopenia. Along with that, specific toxicity for ribociclib is deranged LFT and QT prolongation. For abimaciclib, it is diarrhea. This is something that you can add. So pick 3, I said alpelisib with fulvestrant, or you can give capivasertib. So alpelisib trial was SOLAR 1. So and this was given especially in second line where there was endocrine resistance. So to summarize, you will use an endocrine backbone. What you have used previously, you will change the drug and give. You will give combination therapy with CDK4 inhibitors, PIK3 inhibitors. When it progresses on first line, you will do some biomarker, and second line will be your targeted therapy. So this is what it tries to say. In hormone positive patients, you will see whether they are de novo or they progressed on your adjuvant endocrine therapy. If they have progressed within 12 months of starting, then that means they are resistant cases. In them, you will not use AI. So instead of AI, the other basket of endocrine therapies you will use. What are the other things? Fulvestrant you can use. Elacastrant you can use, which is ESR1 mutation, ESR1 target. So then your standard of care is a combination therapy with endocrine therapy and CDK4 inhibitors. You can quote the trials of Mona 2-3, abimaciclib, Mona Lisa 2-3. 7. If you can remember, you add 7. Ribociclib. For Palbo, it is Paloma 2. Then the same thing.
After first line, it is progress. Then you will do biomarkers by NGS. Then you will ascertain here there is role for HER2. IHC repeat and you will confirm how low they are, because there is role for deruxtecan and other antibody drug conjugates like sacituzumab govitecan. When do you give chemotherapy in HER2 positive? In visceral crisis, you will prefer to, or when there is progressive disease and it has failed multiple lines, that is beyond 3 lines, you can give chemotherapy. To start with, you will use mostly targeted therapy with endocrine therapy. So that is about hormone positive. Next, coming to this is HER2. Yeah. Then we will come to HER2 positive. Okay, this is about HER2 positive. See, in HER2 positive, just remember this table. So in HER2 positive, it is target plus chemo. Chemo will be single agent. You can plus or minus depending on the eligibility of the patient to chemotherapy. You will base your chemotherapy on anthracyclines or taxanes. So you can use one single agent along with targeted. So main intention of your HER2 therapy is you have to use target in your primary systemic therapy, and once the disease is stable or it is complete response, then you will maintain it with targeted therapy. So that is the principle of treating HER2 positive patients. So in HER2 positive patients, what are all the things you have? So this is the basket that you'll have to remember. You will choose drugs from here. One antibody targets to HER2 new, trastuzumab, pertuzumab, margetuximab, and other combination. Antibody drug conjugate, DDM1 and deruxtecan. Here there is role for TKIs, lapatinib, neratinib, tucatinib. Now, what you have to know in HER2 positive, they have predilection for liver and brain metastasis. So your chart here will be one in your first line therapy. You will see whether you have to add endocrine therapy depending on whether it is luminal B or it's only HER2 rich. So if it is luminal B, then along with your target plus or minus chemo, you will add endocrine therapy. Now it is purely HER2. Then you will see whether you will add chemotherapy to your targeted. Targeted therapy is preferably dual, but single also can be used. Next, you will see how the patient is. Now, if the bone metastases are active, it is causing compression, pain. In here, bone directed therapies are indicated to tackle your bone metastasis, and for other metastasis, you will use systemic targeted or TDX or TDM1. So, you will use combination or individual drugs. Here, you can add chemotherapy depending on patient's tolerability to chemotherapy. They here what they say is the perfusion of the chemotherapy drugs or target via blood brain barrier is very less. So brain metastasis is like a sanctuary site in HER2 positive cases. So here you will use some local form of therapy like RT or metastasectomy is indicated in HER2 brain metastasis because your targets or chemotherapy might not work well in them. So going to through the summary, so they constitute about 20%. They are very aggressive. If they are associated with hormone positive, then they become less aggressive and they usually respond to therapy. The combinations or monotherapy that can be selected are monoclonal antibodies which are targeted against HER2, TKI, and antibody drug conjugate. Then your first line chemotherapy can be added like taxane based, preferably docetaxel or paclitaxel, nab-paclitaxel, along with your targeted therapy. So your further regimens will combine your TKIs, that is tucatinib, neratinib, lapatinib, with your endocrine therapy if it is hormone positive, chemotherapy if they are hormone negative. Then this is the same.
although combination don't improve OS, it has been used in selected case of ER positive. That's what it says. Risk of brain metastasis is more, and it is uh, incidence of it is raising because it does the systemic therapy has got poor control of brain metastasis. So the option to tackle brain metastasis usually will be local directed therapies like surgery, radiosurgery, whole brain RT. Then here you will have to know that cardiotoxicity, which are anti-HER2 related, are reversible. They are not dose dependent, and they are regularly assessed by cardiac function. So there's a small diagram here where the cardiac toxicity caused by anthracycline is like type 1. There is destruction of the DNA, and the reactive oxygen species will cause mitochondrial damage, and there'll be damage to the reserves of the cell, so it becomes a irreversible damage. So there won't be improvement in your EF function. It is dose dependent, so the cumulative dose you should be careful while using anthracycline or using in combination with other anti-HER2 therapy or your radiotherapy, because all of them will cumulatively raise the risk of irreversible damage. uh, versus your target by trastuzumab will cause type 2, which is reversible, dose dependent, and when you're using with in combination you should be careful. So this is what when you're seeing with HER2, your special mention about your CNS metastasis has to be given priority. So you will give definitely HP will be there in all of it. Taxane you will add, and or after it responds, then you can switch over to only maintenance with target. This is in Cleopatra trial. Now if it progresses on this first line, then you will have to resort to giving TDX. Then it is Destiny breast 03 in metastatic setting for HER2 positive. The same in TNBC is Destiny 04. So here there is role for even other antibody drug conjugates and TKI. So this you can mention in any combination. Then coming to TNBC. So in TNBC, particularly they want to define TNBC as ERPR expression less than 1%, HER2 expression 0, 1 plus, 2 plus with FISH negative. All of these are revised definition of TNBC in respect to their treatment. So what in TNBC, what you'll have to remember is the biomarkers. We are interested to know ERPR, HER2 also as to how low or negative they are, BRCA status, and PDL1. Then what are the things that you have to choose from? Here in TNBC, apart from your chemo, there is a role for immunotherapy. First, let us go through the summary. Here, you know by definition what are all included under the subset. Here, usually they have less overall survival benefit. The first line here, there is role for PDL1 and CPS score. So you have to know whether they are PDL1 expressing or PDL1 non-expressing. So PDL1 positive, they there is a preference to combine chemotherapy with immunotherapy. That is chemoimmuno as primary systemic therapy. That is keynote 355. In germline BRCA, there is role for monotherapy or in combination with chemotherapy. In PDL1 negative, BRCA wild, here you will base the treatment depending on how extensive the metastasis, how symptomatic the patient is, and mostly it will be palliative intent treatment. Then here, because of low HER2 status, the same antibody conjugates, drug conjugates also can be used. Here, like TDX1, TDM1, and sacituzumab govitecan. What is the thing about chemotherapy? In TNBC, usually they advocate you to use single agent chemotherapy, taxane or anthracycline, especially when there is visceral crisis with liver, because most of them will cause further damage to the liver. So carboplatin single agent is preferable.
in visceral crisis in TNPCs. Then coming to what to choose from. So in the first line setting, you have done ER, HER2, you have done PDL1, and you have even germline BRCA. If the patients are germline BRCA positive, they have found that monotherapy by PARPs are superior even to chemotherapy, and they have got PFS benefit. So it is a preferred first line, and this was told by Olympiad trial. Next, Embraca said talozolone. This is what they wanted to tell in triple negative. So let us go through this chart. Triple negative. So this is what they wanted to tell. Once you get a TNBC case, do your biomarkers, get your PDL1 status. If it is positive, combine your immunotherapy with chemotherapy. If they are negative, then you see for your BRCA status. If the BRCA is wild, then you give some form of chemotherapy. If it is positive, then you subject them to olaparib or talazoparib according to Olympiad or Embraca trial. Then if it progresses on this, then make use of your HER2 low status and target them with that HER2 targets for low, that is TDX1, sacituzumab, target directed. Next will be देखो all negative, like TNBC. HER2 टेस्टिंग इटसेल्फ इज अ क्वेश्चन, तो थोड़ा अच्छे से पढ़ लो इसको। ये जो KI Okay. अपने सब है ना, बिकॉज HER2 आएगा तो हम HER2 टेस्टिंग लिखेंगे, प्लस HER2 का जो रिसेप्टर है उसका भी पूरा अच्छे से डायग्राम और वो बता दो। The IHC and FISH. फिश एंड IHC एंड HER2 रिसेप्टर पे वो कैसे HER2 मॉलिक्यूल जाके ऐड करता है, फिर डाइमराइज करता है, फिर वो आगे जाके कैसे काम करता है। आई थिंक जब HER2, अगर सिर्फ HER2 आएगा देन वी हैव टू राइट एवरीथिंग ना। मेरे ख्याल से आया है अलग से ना HER2 रिसेप्टर। I don't know, but it can come. It's not like it can't. आई थिंक आया No, because है, so इट्स अ many रिपीट, क्योंकि जब मैं वो क्वेश्चन बना रही थी ना तो उसमें मैं देखा था कि HER2 रिसेप्टर का टेस्टिंग भी Then आया है और I'll HER2 put the मॉलिक्यूल के diagram टारगेटेड थेरेपीज in पे this. अलग से क्वेश्चन आया आई थिंक। So in this HER2, 2 and 3 will dimerize, right? It will dimerize, then which is that pathway? तो इसमें एक If you have एक्स्ट्रा the diagram सेलुलर you और send, एक because I have never gone through that pathway. अवनीत ने Never. एक बार पढ़ाया था। अवनीत नहीं है क्या? She must be in library, I think, because she can't talk if she's in library. हाँ मैं अभी बाहर आ गई। वो तुमने एक बार एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर पढ़ाया था ना HER2। आवाज नहीं आ रही है इसकी। Yeah, I've heard it, but I can't recall. That's the thing. पहले मैं तो टीके वाली ठीक है, तुम जब थोड़ा बोलने लायक इस स्टेटस में आओगे तब तुम एक बार पढ़ा देना वो। ठीक है, ओके। हाँ, there are extracellular on the membrane and they dimerize and they activate that thing. तुम जो पढ़ा रही थी वो ही टेस्टिंग ही पढ़ा दो। So by IHC, this many a times you have told. Here percentage of cells is 10%. So you will see the percentage of cells that are positive and intensity of the nuclear staining. If it is मोर देन 10% पॉजिटिव है सेल्स और पूरा सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेनिंग है, तभी उसको 3+ बोलेंगे। और अगर सर्कमफ्रेंशियल नहीं है और लेस देन 10% है, सर्कमफ्रेंशियल नहीं है, तो 2+ बोलेंगे। और लेस देन 1+, उसका यार मैंने भेजा तो था पूरा वो मैंने। हाँ, what I remember is 2 and 3 both are more than 10%.
One is circumferential strong positive, another one is half, and that is why we do fish and confirm. And 1 plus is less than 10%, no staining to faint staining, no cells at all that stain is 0. That is what I remember. एंड इंडिया में अपन IHC पहले करते हैं और एस्को और एस्मो में वो लोग पहले फिश टेस्ट करते हैं. Fish, huh? तो हम लोग IHC के हिसाब से डिसाइड करते हैं. जब 2+ होता है उसको ही फिश में करते हैं. वो लोग सबका फिश करते हैं और जब फिश उसमें वो नेगेटिव आता है तब उसमें वो IHC लगाते हैं. Okay, okay. ठीक है. So by IHC, ratio should be, to tell positive, HER2 CEP17 ratio should be more than or equal to 2, and copy number should be more than or equal to 4 signals per cycle. Then it is HER2 positive. If it is both negative, that is their ratio is less than 2 and the copy number is less than 4, then it is negative. Any of these combination, now we'll have to see concurrent IHC and fish reports. Okay, here positive is more than 2 ratio, but the copy number is less than 4. देखो अपने यहाँ तो सिंपल सा फंडा है. IHC 3 है तो वो पॉजिटिव है. Then we are not doing only HER2 fish testing. Correct. ठीक है, तो हम लोग को IHC 3+ वाले को तो छोड़ देना है. Okay. ठीक है. IHC 2+ वाले को अगर उसके HER2 C17 रेशियो लेस देन 2 है एंड कॉपी नंबर जो है वो मोर देन 6 है. ठीक है. तो वो HER2 पॉजिटिव रहेगा. करेक्ट. ठीक है, तो हमको देखना है फिश में 0+, 2+, 3+ देख लिया. ओके, 3+ है तो पॉजिटिव है. अभी 2+ है तो हम फिश करेंगे. ठीक है, 2+ में फिश करेंगे तो एक तो तुम्हारा ये लास्ट वाला आ जाए कि HER2 CP17 मोर देन 2 है एंड कॉपी नंबर सिग्नल मोर देन 4 है, तो इट विल बी पॉजिटिव. अदरवाइज इफ HER2 CP17 रेशियो लेस देन 2 बट कॉपी नंबर जो है मोर देन 6 है. ठीक है. Then also it is HER2 positive. Then also it is HER2 positive. उसके अलावा all the other conditions are negative. We are not doing it. Because in 3+ we are anyway not doing, so that 4 to 6 will anyway not be applicable for us. We'll anyway take it as positive. So only added thing is this. Less than 2 or more than 6 copy number. Signals. Okay. ये वाला है. हाँ, इसमें ही है. पलटो ऊपर जाओ. हाँ, in this only it's written. अरे कहाँ? नेक्स्ट वाला स्लाइड में आओ ना. बायोमार्कर HER2 टेस्टिंग. somebody is calling. इसमें बायोमार्कर स्टेनिंग के बारे में. हेलो. हाँ, अभी तक तो नहीं आई. ठीक है, आएगा तो उठा लेंगे. हाँ बोलो. This is for ER. लग गया तुम्हारा. Not HER2. ओके, HER2 का भी ऐसे होगा ना कहीं. Here it's not there, but whichever you shared, no, it is there and that. Wait, I have that. I'll open it. So that we can finish off clarifying it. से ऐसा ही था, उसमें लिखा हुआ था कितना है. ER, PR, HER2. दिस इज एलरेड स्कोर है ना. This is eldred score for ER 0 to 1 is negative, 1% is low positive, more than 10% strong ER positive. See, in 2+ and 1+, okay,
This is from the slide that you had sent. I'll send the screenshot. See, HER2, you will do it by IHC. Then you can get 4 types of result. 0 means no staining at all. Or membrane staining is incomplete or barely visible in less than 10% of the cells. That is 0. So there are 2 scenarios. Even less than 10% is 0. 3 plus is more than 10% of cells with complete circumferential membrane staining. Now we are left with 1 plus and 2 plus. In both of these, there are more than 10 plus in cell. But the only difference is in 2 plus, there is complete staining, but it is weak to moderate complete. Okay. In 1 plus, it is incomplete with faint or barely perceptible staining. मतलब So दोनों में if ही it more is than weak, 10% है, but one is weak to moderate complete. In 1 plus, it is incomplete, faintly visible or barely visible. Okay. So less than 10% is that 0. You're 0. And probably that low HER2 came from this concept that less than 10% of that cells which are faint, they caught it out of 0 and made it low HER2. Okay. Sorry, ultra low HER2. Yeah. अल्ट्रा लो वाला पढ़ना पड़ेगा, वो इसमें नहीं था एक्चुअली. अल्ट्रा लो वाला इसमें आया है डेरोक्सिटेकान डेस्टिनी 4 ट्रायल में. Now that included in all your deruxtecan and all that, secutuzumab, govitecan and all that. Okay. So coming to MRI, broadly it is, if it is done full protocol, it is multiparametric, or if you take particular sequences for your faster study, it is abbreviated. It is 1.5 Tesla, you use breast coil, and there is ACR reporting method for this. Then what are the indications? For staging, you will use in post-treatment response analysis, and in screening, especially for high risk and dense breast. And it's a problem solving tool when there is discordance in mammography and in occult axillary node positive patients. So what are the curves that you will appreciate if contrast enhanced MRI is used? If the contrast is persistent and it's the same, then it is curve Roman, 1. 2 is, it's if you take curves like this, just a second, on x-axis, y-axis, if the contrast is same, it is persistent. It's persistent raising, then it is mostly benign. If it fast, rapid raise, plateau or washout, then it is, first you have to, there are actually 3 curves, then we'll go to pattern. 1, it is same persistent, that is 1. Second one is it will go but it will reach a plateau, that is 2. Rapid rise and fall is 3. In malignant, the characteristic is there is rapid increase, small plateau and washout. So this curve is more malignant. Your plateau curves with probably slow rise and plateau is indeterminate. So your curve 2 and 3 will suggest malignancy. It goes in favor, whereas curve 1 is your benign. Then coming to what are the sequences, T1, T2, diffusion weighted, fat suppression and ADC. Then it is T2 hypo-intense breast masses which are malignant. So abbreviated is you will acquire it faster, like about 60 seconds. It is cheap, it is easy to read because there are less sequence and there is faster acquisition time. So abbreviated are fast, ultra fast, abridged with non-contrast. So their role, that multiparametric is equivalent to abbreviated MRI, was given by EA1141 trial, and this can abbreviated can also be used in post BCS. So this was just to summarize. Again, here they've just given indication where you can use screening, and in diagnostic, in staging, post treatment, and post systemic therapy, then in discordance
and in axillary node with occult disease with axillary node positive. So this was brief about MRI. Then axillary staging. Axillary staging, role of they've asked about role of SLNB. So going forward with SLNB, so sentinel, it is the first lymph node that receives the cancer cell by drainage. So the safety of SLNB was established by NACDP 32. Then ASCO technique is dual tracer technique. You can use dye along with radiocolloid or ICG. In पहले radiocolloid, बताओ, डॉक्टर sulfonyl राकेश ने हेड एंड नेक के सेंटिनल लिम्फ नोड ट्रायल बताए थे ना, उनके नाम बताओ जरा. Scent is diagnosed. Scent is one. That is the only thing I remember. Scent. कल मैंने उसके ट्रायल्स बताए थे लैरिंग्स कैंसर के, वो बताओ जरा. Larynx conservation. वो मुझे याद है, मैं अभी पढ़ रही थी. VA ट्रायल, RTOG, EORTC, गॉर्टेक और Gortek. यही है बस. VA RTOG वो है ना 9111, जिसमें 3 आर्म होते हैं. 3 आर्म होते हैं और 3 वन होते हैं. और गॉर्टेक ने बोला होता है, एक बार कीमो लग के रेडिएशन होता है, एक में CTRT होती है ना. हाँ, और एक में गॉर्टेक में TPF वर्सेस, ठीक है, गॉर्टेक में TPF वर्सेस PF है शायद, और बाद उनमें में उसने एक देखा. मैकेंसी एनालिसिस ही है. हाँ, तो मैकेंसी एनालिसिस ने बोला कि कंकरेंट आर्म में 5% OS का बेनिफिट है, इसलिए हमको अगर ऑर्गन प्रिजर्वेशन करना है तो कंकरेंट CTRT देना है. ठीक है. और VA ट्रायल ने सबसे पहले ऑर्गन प्रिजर्वेशन शुरू किया था 1991 में. हाँ, न्यू एडजुवेंट फॉलोड बाय सर्जरी और ओनली सर्जरी. तो इसका वो है कि थोड़े ट्रायल्स ऐसे पढ़ाने हैं कि सामने वाले को याद रहे. मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि वो सिर्फ हमको याद करने के लिए नहीं है, दूसरों को भी याद रहना चाहिए. कुछ ऐसा ट्रिक बताना है ट्रायल्स पढ़ाते टाइम. हाँ वही तो I remember. Scent is for SLNB of head and neck European trial. तुमको नहीं मैं बोल रही हूँ, इट्स लाइक कि उसने पढ़ाने के बाद ना मेरे को उसी दिन भी वो चीज़ याद नहीं थी. चलो आज मॉर्निंग में जो NACT के ट्रायल्स बताया उसमें से कुछ याद है? हाँ, I remember. I'll tell you. The indications were for organ preservation or borderline resectable or unresectable. In mandibular preservation, I remember was Lisitra and Zong et al. It is for resectable. ठीक है. Yeah, Chalker says that Chalker sir का जो ट्रायल है that is for mandible preservation. also हाँ. And in borderline, Ajay Kumar et al. And Ajay Kumar Singh and VM Patil et al. हाँ, in that there was OS benefit, and in unresectable cases mainly for your distant recurrence prevention, and the trials were both with what is that CTRT. I remember Decide Paradigm, they had CTRT with NACT followed by इंडक्शन कीमोथेरेपी फॉलोड बाय सर्जरी. तो उसमें से दोनों में से कोई बेनिफिट नहीं है, दोनों इक्वलेंट टू ईच अदर है. और मैकेंसी एनालिसिस ने बोला है कि कंकरेंट बेटर है, और उससे पहले ट्रैक्स 323 एंड टैक्स 324 बताना है. ट्रैक 324 323. तो अभी तुमने ट्रायल शुरू किया है ना, तो ट्रायल्स ऐसे पढ़ाओ कि तुमको तो सब पता है, तुमने पढ़ लिया ना, हमको भी याद रहना चाहिए थोड़ा बहुत. ट्रायल्स हियर आई हैव नॉट पुट एनी ट्रायल्स इन माइंड. अभी तुम्ही को हमको टीच करना है ट्रायल्स. This is just I mentioned while I was making notes. तो This is very long back. I don't even remember one trial. I mean, breast trials. After this, you can teach, no?
I can from your teach. this one? मैं तो सब ट्रायल्स का एक पीपीटी बनाना शुरू किया है आज से. उसमें सबसे पहले The rest, तुम्हारा if you have, you can. मेलेनोमा का ट्रायल्स ऐड किया है. आई थिंक जो लोग सब सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, सी वंस डेविटा इटसेल्फ हैज प्रिपेयर्ड टेबल्स ऑफ important trials. But not in all this one. The way they've given, that's not just landmark. They Everything they've have given is like pathetic, but at least हमको उनमें से ही कुछ सिलेक्ट करके पढ़ना है ना. ऐसे कि अभी मैं पीपीटी डाउनलोड कर रही हूँ, दे हैव प्लेंटी ऑफ ट्रायल्स. अभी उन प्लेंटी ऑफ ट्रायल्स में किसको इम्पोर्टेंस देना है, किसको छोड़ना है, इट्स बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट फॉर मी. तो व्हाट आई डिड कि मैंने वो टेबल देखा, वो टेबल में जो ट्रायल्स है, वो ट्रायल्स को में से मैं एक एक दो दो सबका सिलेक्ट कर करके से, वो कल डॉक्टर राकेश ने मेलेनोमा का पढ़ाया था, तो उसने भी वही ट्रायल्स पढ़ाए थे, वो कॉम वाले, कॉम और कॉम डी. वो जिराफ वाला ट्रिक उसका अच्छा था. जिराफ मतलब ब्राफ. ब्राफ का उसने क्या किया, पी को पी से सजाया. P16 एंड एक और पी क्या था, P10 एंड P16. हाँ, P10 P16. फिर वो CD लाया तो CD जो थी CD1 की एंट्री हुई, और उसके बाद उसकी TRP कम हो गई, तो TRMP कम हुआ, फिर TRMP लॉस हो गया. ठीक है. तो हाँ, फिर क्या हुआ कि उसने उसी के ट्रायल्स पढ़ाए. तो जो ब्राफ का ट्रायल था ना, उसका कॉम करना था, तो एक का नाम था कॉम्ब और एक का नाम था कॉम डी. कॉम बी था एडजुवेंट का, और कॉम डी था शायद मेटास्टैटिक का. तो वो जो that was for only nivolumab or pembrolizumab. That is for BRAF. तो इसीलिए तो मैंने जिराफ का कॉम किया था. जिराफ इज ब्राफ ना. करेक्ट. तो जिराफ का कॉम करना है, तो आके कॉम्बी, एक कॉम्बी इज फॉर एडजुवेंट एंड एक कॉम्बी डी जो है वो मेटास्टैटिक है. ठीक है. उसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं है, बट थिंग इज कि फिर मैंने मेलेनोमा को आज देखा उसमें, किसमें, डेविटा में. तो उसने ही दो तीन ट्रायल्स पे थोड़ा फोकस किया है उसमें, मेलेनोमा में. एंड दैट इज ओनली कॉम बी एंड कॉम डी. तो पूरा तो अपन याद नहीं कर सकते 100%. तो उसका अगर 50% भी हम कर पाए, जैसे कि क्रॉस वाले ट्रायल्स में जो है, अपन जब इसोफेगस पढ़ते तो उसने पूरा टेबल बना के दे दिया है ट्रायल्स का. वी आर नॉट रीडिंग ईच एंड एवरी ट्रायल, बट हमको पता है कि क्रॉस एंड वैन शपीरो इससे पढ़ना है, और मैजिक और उधर पे एक और है, 2 पढ़ने होते हैं. मैजिक क्लास. हाँ, तो व्हाट आई एम डूइंग कि वो टेबल का स्क्रीनशॉट लेके आई एम क्रिएटिंग वन पीपीटी. Okay. तो फ्यूचर में this breast trials, if you can go through, we can finish it off today, because I've just been left with only some SLNB and oncoplasty. That's all. Otherwise it's over. ब्रेस्ट में मेरे को वो ट्रीटमेंट, सर्जरी से पहले वालों का तो प्रॉब्लम नहीं है, सर्जरी के बाद वाले जो ट्रायल्स हैं वो थोड़े ऐड करने पड़ेंगे. मेरे प्रेजेंटेशन में सर्जरी से पहले वाले पूरे ट्रायल्स हैं, आरटी तक ट्रायल्स हैं, इवन हाइपोफ्रैक्शनेशन और उन सब के भी ट्रायल्स हमको पढ़ने हैं. लंग में एक क्वेश्चन आया है, यू हैव टू कंपेयर SBRT वर्सेस सर्जरी इन स्टेज 1 डिसीज. अब ये कोई क्वेश्चन हमसे पूछने वाला है, बताओ. और मैं वो लंग का डेविटा पढ़ा, उसमें SBRT का एक भी नेम्ड ट्रायल नहीं दिया है उसमें. I think 2 are there which are ongoing only. What is the thing? ऐसा है वो बुरा हाल है, इसलिए ट्रायल्स का मत चिंता करो, जितना याद आएगा उतना ही याद आएगा. चलो पढ़ाओ, क्या सेंटिनल लिम्फ नोड तुम पढ़ा रही थी.
this anyway we know dual tracer, it will decrease the false negativity rate. Then by injection peritumoral, subdermal, or sub areolar 3 ml. Then this is just to brush up. Then depending on your clinically node positive or limited axillary node involvement, that is 1 or 2 nodes, then you will resort them to SLN. Then whether to complete axillary dissection or you can use some other form of axillary treatment, now you will decide. If it is SLN positive, then if you are doing BCS, then you will give some or the other form of whole breast RT. So in that case, you can safely omit ALND if there are 1 to 2 nodes positive and it is T1, T2 patients and no preoperative chemo has been given. Otherwise, if SLNB positive, then you will have to do ALND. In mastectomy patient, if you are planning to give some form of RT to the axilla, when the nodes are 1 to 2, no preoperative chemo or T1, T2, then also you can omit ALND and give radiation to axilla later. If it is SLND negative, then there is no need for further axillary staging. If SLN is not identified, then also ALND is indicated. In N plus disease, there is role for ultrasound guided FNA or core biopsy. One, to confirm node positivity, because if you are giving NACT, you should know pre NACT staging. Then you will also use this opportunity to place marker, because there is role for target axillary dissection. Then if it is FNA core negative, then you will go with your formal SLN mapping. If it is FNA or core biopsy positive, then if this patient has received some form of preoperative therapy, then you see if there is preoperative therapy and the patient is SLNB positive, then it is ALND. If that N plus disease has converted into node negative, then you can stop with SLNB, that is category 2B. Otherwise, you have to do completion ALND. Post chemotherapy positive, always ALND category 1. If there is N0 now, then there is an indication for omitting, but it is category 2B. What are the trials of saying कि post NACT you can do sentinel lymph node biopsy? I only remember is Sentina. Ecozog Zoo 71 है क्या? 1071 ना 1071 सेंटिना और SNFNAC. Okay, SNFNAC. Okay, this is post NACT SLNB. तो इसमें से जो सेंटिना ट्रायल है उसने ISC के साथ साथ पहले ISC किया है और उसको फिर उसके साथ वो भी किया है, तो इसलिए इसमें मोर देन 2 के बाद ही सफिशिएंट हो जाता है, पर बाकी सब के हिसाब से हमको मोर देन 3 लिम्फ नोड्स निकालने हैं टू गेट फॉल्स नेगेटिव रेट लेस देन 10%. So in Sentina, they have not just used FSL, they have added IHC also to confirm. So it will be 2-stage axillary dissection. तो इसमें ये है कि that 2 मतलब how much lymph nodes we should remove for minimum lymph node should be removed to assess the lymph nodes. तो 3 और equal to 3 है, पर सेंटिना में 2 से भी काम चल गया बिकॉज सेंटिना में वो IHC भी यूज कर रहा था अलॉन्ग विथ सेंटिन फ्रोजन सेक्शन. ओके ओके ओके. उसका भी एक टेबल है डेविटा में, तो वही मैं तुमको बोल रही थी कि जो डेविटा का टेबल है ना उसको ऐड करते हुए चलोगे ना तो एंड में हमको बहुत इजी हो जाएगा. फ्यू इम्पोर्टेंट ट्रायल्स उन्होंने एटलीस्ट वो टेबल बना दिया है. आई थिंक वो टेबल रिमेंबर करने में डिफ़िकल्ट है
पर जैसे कि अब मुझे याद है कि उस टेबल में ये सेंटिना एकोसॉक्स ये और SNFNAC ये 3 का टेबल उसने बनाया है पोस्ट NACT में. This so we are reading since preparation time also na. Sentina I remember because after that I've not read from that. So I can add. चलो आगे Yeah, चलो. that is what they. After exam na I will take one class on breast again. मेरा breast बहुत favorite topic है. Whatever is deficient now you can cover up. I'll finish this oncoplasty. So whatever is there remaining you finish it off. I will finish it off but not today na. I have not read abhi. Notes that you had added in the NCCL which you just thought today, can you please NCCL की HODS CS वाले जो notes आपने add किए थे ना जिसमें आपने अपने additions भी किए वो please share कर दो. हाँ हाँ हाँ. सुनाई नहीं आ रहा है क्या बोल रही है ये. No, she's asked me to share that NCCN with the notes that I've made, no? Okay. There are so many. We can this trials. I'll add it up. Don't worry. Okay. So going to oncoplastic breast surgery. So we'll go through the contraindications for breast conservation surgery, which are absolute: inflammatory breast cancer, diffuse suspicious malignant appearing microcalcification. If it is too extensive, then inability to clear multiple positive pathological margin one or more times. So up to 2 times it's accepted. More than that, you will resort to mastectomy. Homozygous ATM mutation, multicentric disease with any of the following criteria. That is, these patients have been recipient to neoadjuvant chemo or endocrine therapy less than 40 years, TNBC, multicentric disease with more than 2 lesions in more than 2 quadrants, any lesion size more than or equal to 5 centimeter, BRCA mutation carrier, multicentric pure DCIS, inability to achieve negative margin, like persistently you are getting either DCIS or invasive positive, N2, N3, any reason where a whole breast RT cannot be given, and absolute is pregnancy also. So absolute contraindications are inflammatory, extensive DCIS, inability to get pathological margin after one or more re-excision attempts, pregnant women, ATM mutation, multicentric disease with one of these following: young patient, DNBC, multicentric disease more than or equal to 5 centimeter, BRCA carrier, multicentric DCIS, N2, N3, and those who cannot receive postoperative RT. Relative contraindications for BCT is genetic predisposition of known breast cancer, P53 mutation, connective tissue disorder, any prior radiotherapy with high dose or volume restrictions. Coming to oncoplastic technique, here it is you are removing the tumor with an intention of giving oncological benefit, and you will add plastic surgery abilities to give them back the cosmesis which is deranged secondary due to your surgery. So by definition there are 3 aspects that are included in breast oncoplasty. So it is an aesthetic approach to your ablative surgery. Contralateral breast symmetrization. So you will, if you are doing ablative surgery, you will give some aesthetic and or cosmetic result to them. You will reconstruct the post breast conservation surgery defect, and you will see that both the breasts are symmetrical. So with specific to Indian scenario is
There is lack of awareness, lack of screening, affordability issue, delayed presentation with advanced diseases, high mastectomy rates, and relatively moderate survival, that is 60% over 5 years. So, what are the pathways of your breast cancer surgery? So, breast cancer surgery, patient can either undergo mastectomy or breast conservation surgery. All contraindication to BCS will undergo mastectomy. They are reconstructed or they are left alone. If they are reconstructed, it can be implant based, autologous, or hybrid. It can be immediate or delayed. Same with your breast conservation surgery also. Simple breast conservation surgery where defects are primarily closed, or you use some form of oncoplastic technique as a form of multidisciplinary team to reconstruct. This can be either implant based, autologous, or hybrid, or immediate or delayed. So next, there are by complexity, it is graded 1 to 6. If it is simple excision and you will do nothing to it, it is 1. Then if you do some form of glandular mobilization to reconstruct defects which are less than 25%, it is 2. If it is the defects are more than 25% and you close them, then it is 3. If you use some form of local flaps, that is 4. If you use reduction mammoplasty along with your procedure, it is 5. If you use distant flap with microvascular reconstruction, it is complexity 6. Then levels of oncoplasty. Level 1, level 2. Level 1 is if less than 20% of the volume of the breast is resected for tumor excision. Level 2 is more than 20% of it is removed, and you resort to volume replacement or therapeutic mammoplasty for reconstruction. Then for ablation team, that is mastectomy, what you need is a general surgeon, breast surgeon, or surgical oncologist. But for a reconstruction team, it is plastic surgery in your team is also important. Then this is the model for oncoplastic breast surgery. It is surgeon removes and reconstructed by a plastic surgeon. So it's a hybrid complete breast surgeon. So what is the why oncoplasty here? We were resorting to mastectomy most of the time. It was if it was a large operable breast tumor, if there was discrepancy in the breast tumor ratio, the location was bad, like central quadrant tumor, so much of loss of volume was there, still you could not preserve the symmetry of the breast, large ptotic breast, loss of skin, and cavity shrinkage post adjuvant treatment. So principles of oncoplasty, there are some things that you'll have to consider. So patient factor is what's the age of the patient, comorbidity association, BMI, by breast, the size, shape, and doses, what is the patient choice, and informed consent. You will see the donors area and you inspect them. Then tumor factor is where is the tumor, how many tumor, what is the breast tumor ratio, volume loss that is anticipated, probability of reoperation, and contralateral reshaping. What are the elements of oncoplastic breast surgery? You should know the excision volume, where the tumor is located, and what is the glandular density. Then by location, it can either lie in upper outer quadrant or upper inner quadrant or lower pole. The favorable ones are upper outer quadrant. Then you should know the density of the breast. Greater the density by parenchyma, lesser the necrosis. So your reconstruction is going to be fairly successful. So approaches are submammary, periareolar, and lateral approach. These are the various types of incision. You can do a crescent mastopexy, or you can do a radial ellipse, or a parallelogram, or reduction mastopexy type of excision. This you can remember or not. I don't remember actually. Okay. Krishna P. Klopp, this paper gave us a quadrant based management of breast lesions in oncoplasty. So they gave bi-level classification. So level 1 is used for volume of excise which is less than 20%. You resort to level 2 if more than 20% of breast volume is excised.
So what are all required? In level 1, the volume of exercise is less than 20%. Skin required requirement of skin excision for reshaping is not there. There is no requirement for mammoplasty, and it is done in dense breast, preferable in dense breast. So in type 2, it is done in even fatty breast, where you require skin excision for reshaping and mammoplasty, and volume reduction is 20 to 50%. So two other techniques is volume displacement or volume replacement. If it is simple maneuvering the glandular to replace the or to displace and fill up the 20% volume, it is simple volume displacement. If you have to resort to complex procedures, then it is level 2. Volume replacement by autologous flap, which are perforator braced or regional flaps, can be used for volume replacement. Uh, volume displacement is glandular shaping, reduction, mammoplasty, and volume replacement is perforator based flap and LD myocutaneous and thoracoepigastric flap and lateral thoracodorsal flap. This is another complex diagram where they have taken consideration of the volume of the breast, whether it is associated with ptosis or cup size, and depending on that they have combined them, whether there is depending on the defects that are caused after excision, to know which type of oncoplastic surgery you have to resort to. Let us go by quadrant excisions. So there's one diagram. So coming to per quadrant, if it is in upper quadrant, then you will see whether it is near to nipple areolar or away from nipple areolar. If it is nearer to nipple areolar, then you will see whether it is a ptotic breast or a non-ptotic breast. If it is a ptotic breast, then you will just remember this. I made diagram here. If it is nearer to NAC, then I remember it like RCB. B is with ptotic breast, so I'll write it down. RC is round block mastopexy and crescent mastopexy, and this is in non-ptotic breast. Then moving away from the nipple areolar complex, it is RI. Lower is with ptotic breast, so that is inferior pedicle mammoplasty. R is racket technique. So next coming to lower quadrant. Lower quadrant are divided into lateral, inner or central. So in alphabetical order, if you remember, it is U, V, W, Z or G. Some pronounce Z as G, so J. So if it is inner, it is V. If it is central, it is Y's mammoplasty. J is for lateral third. For central quadrant, ऐसे again भी you याद have कर to सकते हैं कि जो वाइस लोग रहते हैं वो बहुत स्टेबल रहते हैं, तो मतलब वो हाँ मिडिल में है ना वाइस, तो सेंट्रल लोग जो है स्टेबल लोग है ना, वो लेटरल है ना, वो मीडियल है, तो वाइस लोग मिडिल में है, ठीक है। और वी इज मीडियल, वी इज मीडियल एंड जे, एल और जे का जो शेप है वो अप्रॉक्स थोड़ा सेम है। एल ओके तो लेटरल थर्ड इज जे एंड मीडियल फिर पता है वी बचेगा, ठीक है। तो वाइस लोग बैलेंस लोग रहते हैं तो वो मिडिल में है, सेंट्रल में है वाइस लोग, और जे और एल थोड़ा सेम दिखता है तो जे वाला एल है और वी वाला हो गया। सो सेंट्रल क्वाड्रेंट अगेन आई डिड नॉट सेंट्रल क्वाड्रेंट में मैं हमेशा हम लोग रिसॉर्ट ही करते हैं फॉर सेंट्रल, because you will refashion that thing ना। मोस्टली सेंट्रल क्वाड्रेंट है तो उसमें निप्पल एरियोला कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व रहता है, तो उसको निकालना पड़ता है। और इफ निप्पल एरियोला कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व नहीं है देन हम लोग राउंड ब्लॉक टेक्निक करते हैं। तो हम लोग के नोटोसिस वाली लोग चीज़ें करते हैं, मतलब सेंट्रल लंपेक्टमी
ग्रिसोटी सॉर्ट ऑफ सेंट्रल लंपेक्टमी हुआ, बहुत सारा टोसिस है, देन यू नीड नॉट टू रिप्लेस सेंट्रल टिश्यू विथ एनी अदर थिंग, तो तुम सेंट्रल लंपेक्टमी करके उसको अप्रोक्सीमेट कर दो। और ग्रिसोटी में हम लोग मोबिलाइज करके नीचे से लाते हैं, तो अगर टोसिस नहीं रहेगा पेशेंट का, मिनिमल टोसिस है, तो आपको नीचे वाला टिश्यू थोड़ा लाना पड़ेगा। इफ टोसिस है देन यू कैन अप्रोक्सीमेट आफ्टर एक्साइसिंग होल लंप, है ना। In Grisotti, some upliftment will be there, so preferable in. दिखा ऊपर Rotic डायग्राम करके तुमने ना। ग्रिसोटी का बनाया है ना, ऊपर है, हाँ ये। तो इसमें क्या करते हैं, Yeah. ये जो बीच Some बीच up का पूरा is एनएसी there. हटा दिया, ठीक है। और जितना एनएसी हटाया, जो निप्पल का साइज है उसी साइज का ये नीचे वाला होल रखते हैं, स्किन रखते हैं, और एक वाई शेप का इंसिजन you- बनाते हैं ऐसे टूवर्ड्स लेटरल, वी Like वी this. टाइप का बनाते हैं, वी Nail. टाइप का। और वी के बाद उसको Nail. जितना आपका एनएसी का अपोजिट निप्पल एरियोला कॉम्प्लेक्स का निप्पल जितना है उतना ये सर्कल छोड़ते हैं, जो स्किन दिख रहा है ना, और बाकी सबको डीएपिथेलाइज कर लेते हैं। तो Correct. एनएसी की Then you will जगह पे close जो एपिथेलाइज वाला एरिया है वो उसको अटैच कर देते हैं, और जो डीएपिथेलाइज एरिया है उसके ऊपर का स्किन अप्रोक्सीमेट कर देते हैं। सॉर्ट ऑफ दिस ओनली। हम लोग रिसोर्टी, मतलब मैंने किया है रिसोर्टी, आई हैव डन। राउंड ब्लॉक भी किया है मैंने। Okay, just and take a minute break. I'll just join, right? 2 minutes. Somebody at the door. Yeah. ये अवनीत कहाँ भाग गई, मैसेज करती। ओनली यू एंड मी आर रीडिंग, वेयर आर एवरीवन। चलो ठीक है, हम ही दोनों पढ़ रहे हैं तो पढ़ लेते हैं। Then lower is VWJ. That is over. Then all that upper inner for less than 20% volume loss, level 1 is enough is there. There is no specific technique for more than 20% loss. In question, there is per quadrant reconstruction also is asked. So volume replacement, it is a complex procedure for more than 20%, especially in range of more than 50%, you resort to replacement. You use myofasciocutaneous flap like latissimus dorsi or thoracoabdominal flap, perforator, that is TDAP, LICAP, MICAP or ICAP, with LTAP also you can use. So if it is medial perforator, anterior perforator, lateral perforator based flaps, then
So this is the diagrammatic representation of the same. इसको हटाओ ना ये. Medial intercostal artery perforation my cap, anterior intercostal I cap, Remove lateral that intercostal icon I na. cap, musculocutaneous, that is thoracodorsal artery flap, it is TDAP, excuse me, lateral thoracic artery perforator is LTAP. So lateral intercostal or lateral thoracic artery, LTAP. So the same thing they've mentioned by clockwise. Whatever we have studied by clockwise, they've written. You can mention the same. So this is a very complex diagram. I'll just tell what are the things that they've taken into consideration. That is breast size, A, B, C, D cup size with ptosis. Then they have merged it with tumor size and location. So there are 4 ways of doing convention tumorectomy, oncoplastic tumorectomy, mastopexy, and oncoplastic reduction mammoplasty. So if all these reds, if large ptotic breast with a medium and large size tumor, a peripheral or central location, then you will resort for symmetrical contralateral reduction mammoplasty. Coming to mastopexy with regional or free flap, especially in medium to minor ptotic breast with a large tumor, peripheral or central location. Then oncoplastic tumorectomy like volume displacement, you can use it for large breast with medium, large or medium breast with medium or with medium tumor size. For small tumor size in any of these breasts, you can just resort to tumorectomy and live. By and large, to write about this, you have to have 4 parameters taken into consideration: breast size, ptosis, tumor size, tumor location. Depending on that, whether you will resort to just displacement or replacement technique is what you have to mention. Here again, there is another diagram where they have written tumor located anywhere near within the breast. You will resort to radial ellipse segmental incision or circumareolar approach for segmental resection. Then tumor located in upper or central, here it is bat wing, hemi bat wing, crescent, then donut mastopexy, B flap, or central quadrantectomy. If it is in lower, it is triangular incision inframammary, and you will use reduction mastopexy also. So, what is this oncological safety? As of now, no RCTs have been conducted. Review of oncological outcomes after this one have been studied in individual studies. There are 55 with 6,000 patients with 5 years of follow up. So, local recurrence rates have been about 3.2% and positive margin rate of 10.2 and re-accession rate of 6, which is quite acceptable. So in your decision making, it can be offered to any EBC or LABC patient. Those with contraindication to BCS have to be eliminated. Then those suitable for BCS, you will see, you will go ahead and you will add your oncoplasty option depending on your volume of resection, patient characteristics, and breast characteristics and quadrant location. So Indian patient attitude in oncoplasty, here they are worried, they have well acceptance rate for mastectomy, they are not okay for contralateral procedures, they are reluctant for resurgery and staged procedures, they always have apprehension for positive margin and resurgery and recurrences. So, what are the questions that when we resort to, once we have assessed the patient and staged them, you can see if you can avoid mastectomy and resort to BCS. Avoiding BCS is only in your absolute contraindications. See, you have to get an upfront margin negative. Then you have to assess the volume loss, see what oncoplastic techniques are needed.
Then any other option like post NECT, mastectomy, or breast reconstruction, if needed, you will have to plan accordingly. Just written some 2 things here. So, oncoplasty, that's all. Breast MRI, this is what I made concise thing from whatever you had sent to me. So this was the graph I was telling. So it will raise, it will plateau, or even go beyond. Then it will raise, it will take a plateau, it will start decreasing. It will raise, take a plateau, and decrease sharply. So 2 and 3 are indicative of malignancy. Same thing. We can go through the Devita tables. I'll open that. Wait. 2 to 4 and more than 4. MRI recommended in whom by evidence, by expert opinion, whom we have insufficient evidence, and whom we don't recommend MRI scanning. So, outcomes of bilateral prophylactic mastectomy, some studies, Hartman, Majors, and Rebeck, you can mention if you remember in your risk reducing surgery. एक मिनट दिखाओ ऊपर वाला दिखाओ. So, हार्टमैन मजर कहाँ गया? this one, no? Hartman, Majors, and Rebeck. रेब मीजर्स हार्टमैन तो अपनी सर्जरी का प्रोसीजर है, तो हार्टमैन एंड रेबेक ऐसे याद रख लेते हैं. रेबेक हार्टमैन जो है वो प्रोफाइलेक्टिक मैस्टेक्टमी, रेबेक हार्टमैन का हमने प्रोफाइलेक्टिक मैस्टेक्टमी किया. Reducing mastectomy. Prophylactic See, mastectomy. risk reducing mastectomy, no? So, something with R, so Rebecca will remember. With M is Majors. Then Hartman ends with MANN. So, what are the population? R and M, that is Rebecca and Majors took BRCA positive carriers, and the risk reduction was about more than 95%. In Hartman, those with family history, they took median follow-up with 90 to 94%. So this table we can add for risk reducing surgery. So RM. This we saw yesterday, 7 factors. ER, PR, HER2 KI तो अपन को याद रहेगा. ग्रेड लिखना है और DNA कॉपी नंबर और M. P53 माइक्रो RNA एक्सप्रेशन. तो ऐसे याद रखो ER, PR, HER2 और KI67 तो ठीक है. उसके बाद हमको ग्रेड हमारा हर बताता है, मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड, पुअरली डिफरेंशिएटेड, ये सब बताता है. और इसके अलावा हमको DNA RNA लिखना है और P53 लिखना है. Then last is P57. ठीक है. Then this is also important, indications for surgical biopsy after core needle. Mainly when there is lack of concordance between imaging and your diagnosis. That is one thing. Then if you have failure to sample calcification, your stereotactic biopsies you are getting, but you're not getting an adequate result. In pathological subtypes like ADH, pleomorphic, LCIS, then complex sclerosing lesion and papillary lesions, you will do surgical biopsies. Radial scar and papillary lesions. This way when we went through. ये तो जन्मों में याद नहीं होगी. दिस टेबल, ये वाला टेबल किसका है? DCIS का. Omission of RT. So what DCIS. they mentioned about this study,
they have seen what is the local recurrence and how it is translated into breast cancer specific survival. So, NSABP 17, yesterday we were discussing for the surgical with plus or minus RT. Then NSABP double, that is B34 for tamoxifen and adjuvant for DCIS. ठीक है, तो इसमें बोल So the रहा other है thing, NSBP 17 EORTC और स्वेडिश एंड RTOG। ये RTOG और EORTC सब जगह होता है, उसका नंबर कितना याद रखेगा नहीं भगवान ही मालिक है। बट हम लोग ऐसे पेज बढ़ाने के लिए EORTC स्वेडिश एंड RTOG लिख देंगे, नंबर नहीं लिखेंगे, ठीक है। और सब ने बोला है कि P वैल्यू सिग्निफिकेंट है, significant. तो RT देना है ना। So, this risk categories we don't know in whom they have said ये सिर्फ हाई ग्रेड में देने ना आरटी, सब में तो नहीं देना ना हाई ग्रेड में, intermediate and high. So this, if we go through the trial, we will know which subgroup actually had benefit. वैन न्यूज स्कोरिंग यूज किया है क्या सबने भी? No idea. ठीक है, फिर भी हमको मैनेजमेंट आएगा तो वी विल राइट कि BCS करेंगे तो उसके बाद RT देंगे। मैस्टेक्टमी के साथ RT अवॉइड करते हैं, पर BCS करते हैं तो RT देते हैं, ऐसा NCCN में भी मेंशन है ना। In low risk, you can omit. You can write. You can add a thing that according to Van Nuy's prognostic index, if it is low risk, we can omit RT. इसमें देखो तुम्हारे नीचे के पैरा में लिखा है even in low risk DCIS, RT can lower the risk of in breast recurrence, although the some patients the risk of recurrence may be low enough them to elect to forgo RT. Yeah, because the concept is it is just in situ lesion. Why do you want to overtreat it? Is there this one? Because even if they recurred, if you re-excise, they did not have any bearing on your overall survival. So that is why they wanted to omit RT. So you can write it if you want. ठीक है। So in management of axilla, 10 local recurrence rates in keynote NSABP trials. Here, trial whether systemic therapy 13, 14, 19, 23 ये काय के है? ये तो मेरे ख्याल से उसके हैं एंड्रोजन थेरेपी के। टेमॉक्सिफेन देना है कि नहीं देना है? 3.1. So this is local recurrence after BCT has declined over time. So 10-year recurrence rate is 8 to 19% in retrospective and RCTs who have been excised with negative margin. Table 53.9 shows 10 years recurrence rate in node negative NACBP trial. ये वो पेशेंट है जिसको हम एडजुवेंट एंडोक्राइन थेरेपी दे रहे हैं। Chemo is there, no? ER status negative also is there. तो नेगेटिव वाले में तो कीमो बेनिफिट है ना। पॉजिटिव वाले में टेमॉक्सिफेन वर्सेस नो टेमॉक्सिफेन। B14 is for tamoxifen, B13 is for chemo and 19, 20, 20, 33 पता नहीं क्या है। पर एडजुवेंट कीमो देना है वो किसने बताया? NSBP 13 ने। और एडजुवेंट टेमॉक्सिफेन देना है किसने बताया? NSBP 14 ने। Correct. So they have said that the decrease in local recurrence rate is a result of combination of improved mammographic and pathological evaluation and more frequent use of adjuvant systemic therapy. So these are all BCT plus adjuvant treatment. और इसमें भी एक बगल वाला एक ट्रायल देखो, इसमें कॉमेट ट्रायल मेंशन करना। DCIS में एडजुवेंट ER पॉजिटिव होता है तो टेमॉक्सिफेन देते हैं ना फॉर प्रोफाइलैक्सिस। तो वो कौन सा ट्रायल होता है? वो कॉमेट ट्रायल होता है।
कंपैरिजन ऑफ ऑपरेटिव वर्सेस मॉनिटरिंग एंडोक्राइन थेरेपी। फेज 3 रैंडमाइजेशन एंडोक्राइन। ट्रायल है जिसने बोला था कि हमको टैमॉक्सिफेन देना चाहिए। एनएसबीपी 35 ने बोले थे। 35 34 तो तुमने कल पढ़ाया था, तो इसमें 34 नहीं है, 35 है। 35, हाँ। 35 में वो पोस्ट मेनोपॉजल पेशेंट को ईआर पॉजिटिव में No, लंपेक्टमी। this 35 is between tamoxifen and anastrozole. We'll see 34 is placebo, if I'm not wrong. इसमें Tamoxifen दिया with होगा आई placebo. थिंक। 24 कुछ बोल रहा है। NSABP. 24 दे रहा है, 34 is 24। 24, okay. 24 बोल This रहा is है कि bisphosphonate. आरटी के साथ टैमॉक्सिफेन दो 20 mg फॉर 5 years। तो ईआर पॉजिटिव टैमॉक्सिफेन ने रिड्यूस किया है इवेंट बाय 51% एंड देयर इज नो बेनिफिट सीन इफ DCIS वाज ER नेगेटिव। So it is ER positive DCIS. NSABP 24 is with tamoxifen. 35 is tamoxifen versus aromatase inhibitors, where through 9 years follow-up, they were associated with lesser recurrences, no differences in metastasis. Oh, okay. So this is also an option. That is NSABP 35. Then COMET is comparison of operative versus monitoring and endocrine therapy. This is for localized ये जो तुम DCIS बोल रही थी treatment ना, of ऑब्जर्वेशन अलोन इन लो रिस्क पेशेंट, ये कॉमेट ट्रायल ने बोला है। So observation alone in low risk is under investigation in phase 3. That is common. So results are not out still. आ गया होगा आई थिंक, अब तक ये पुराना ट्रायल है, देखना पड़ेगा। Because okay, so in DCIS you will write NSA 17 लिखेंगे सबसे 17, पहले। 24, 35 COMET. ठीक है। और एडजुवेंट कीमो And देना है local recurrence. B13, एडजुवेंट टैमॉक्सिफेन देना है B14। Okay. Next, so after mastectomy reconstruction, this basically you can divide it into implant base. So you can use implant or tissue expander. Both of this will come in implant based. In autologous tissue, you can divide it into free flap or roco-regional flap, where DIEP and TRAM free flap, or regional you can mention TRAM with latissimus dorsi, and free flap you can mention superior gluteal artery perforative flap. So advantages will be one stage procedure. If it is gone also, you can just throw that. There is no donor side morbidity, shorter operative time, all that. In these donor replace flap, so flap loss, natural contour, you might not get you will get natural contour, and you will have to resort to donor side. There'll be scar, there'll be hernias, there'll be delayed recovery, implant. What is flap failures, resurgery, all that will be more. Okay. After adjuvant also, there'll be reduction in size, asymmetry, all of this in autologous. And another यही thing था। is hybrid, where you will use implant with autologous. Then this was that post NACT sentinel biopsy trial. So there were 3: ECOSOC 1071, Sentina, and FNAC. So तो here SNFNAC था वो ट्रायल जिसमें 2 नोट से ही काम चल गया।
इसने So in आईएससी both किया of था। these, easy. Yeah. SNFNAC ने आईएससी किया था, तो उसमें 2 नोट्स से ही काम चल गया। Yes. Next is the same thing. We went through this one. Here, that cutoff was there. See here. For HER2 patients, you start with chemotherapy. You can consider even as small as 0.5 centimeter. In triple negative, you will start from like more than 0.6. Yeah. So in any you will consider. TNBC और HER2 में लेस देन HER2 पॉजिटिव को सबको देना है, ठीक है। और TNBC में 0.6 सेंटीमीटर से भी देना है, तो भी वो सबको ही देना है। एंड कीमो जो ER/PR पॉजिटिव है उसको मोर देन 1 सेंटीमीटर से देना है। And this is any form, neoadjuvant or adjuvant. Neoadjuvant therapy is preferred in stage 2, stage 3, HER2 and TNBC. Okay. But yesterday we saw 2 centimeter only as cutoff, no? For surgery, for neoadjuvant. Neoadjuvant. So this is that sequential, extended, or upfront. Okay. Major studies comparing adjuvant therapy incorporating aromatase inhibitors with देखो tamoxifen. NSABP ये MA17, MA17 and NSABP 33 is the trial जिसने बोला था कि 5 years देना है। Extended after 5 years of tamoxifen. Like you will add 5 years of aromatase inhibitors after tamoxifen. 5 year tamoxifen ले लिया, उसके बाद आपको एक्सटेंड करना है विद एरोमेटेज इनहिबिटर। ये 2 ट्रायल याद रखो। उसके बाद जो 10 साल देने वाला है, या ऊपर लिखा है देखो, एटलस ट्रायल है और एटम ट्रायल है। देखो जस्ट बिफोर दिस टेबल, Here. The Atlas showed that 10 years tamoxifen reduced recurrence compared with the 5-year treatment. हाँ, ये एटलस ने बोला है। फिर MA17R ट्रायल randomized 5-year additional 5-year letrozole versus नीचे आओ, placebo after 5 years. तो AI प्लस tamoxifen और प्लेसिबो, तो इसने DFS का इम्प्रूवमेंट बताया है। There in both Atlas and MA also, but in Atlas all 10 years is tamoxifen. In MA it is tam plus AI. ओके। और NSABP 42 ने बोला है showed 5-year AI treatment after 5-year AI plus tamoxifen have also moderately reduced the cancer recurrence. इतना नहीं, एटम याद रखना होता है और MA17 याद रख लेंगे। एक एटम ट्रायल भी होता है, वो तुमने कल पढ़ाया था, उसमें एटलस नहीं दिखा था। मैं तुम्हें बोली थी कि एटलस है। Adjuvant tamoxifen long standing against short. 5 versus 10 with an improved OS and DFS. इसमें एटम है क्या? ऊपर देखो। No. Wait, I'll search. जितना मुझे याद है ना, वो एटलस एटम तो है ना, अल्टीमेटली आप जब ये बताते तो एटलस और एटम के जो पॉपुलेशंस थे ना, वो कंबाइन करके उन्होंने दिया है। मतलब दे बोथ वर स्टार्टेड सेपरेटली, बट जो फाइनल आया ना, वो एटलस एटम कंबाइन करके आया, जो आपका फाइनल एनालिसिस आया। तो जब भी आप बात करते हो, आप एटलस एटम दोनों साथ में बोलते हो। अच्छा, मतलब मुझे जितना याद है कि एटलस और एटम दोनों यही थे, एक्सटेंडेड वाले थे, बट फिर उन दोनों की पॉपुलेशन भी आई थिंक इंटरमिक्स थी। एंड आप जब बताते भी हो उनके वो, तो एटलस और एटम साथ में बताते हो, जितना मुझे याद है।
I'm not very sure. Okay, I'm seeing. Okay, we'll continue. If anything, we'll get to know later. We can. सॉफ्ट एंड टेक्स्ट है उसके ऊपर, देखो जरा ऊपर आ। टेलरेक्स स्टडी Node negative for adjuvant chemotherapy omission. ये रहा सॉफ्ट एंड टेक्स्ट, They came up सॉफ्ट टेक्स्ट Ovarian स्टडीज। हाँ, ओवेरियन सप्रेशन विथ AI. So AI was better than tamoxifen. That is what they said. Adverse effects were more with tamoxifen, and even survival there was some benefit. So it is ovarian suppression with tamoxifen or with AI, that is टेक्स्ट का फुल फॉर्m है tamoxifen and exemestane trial, and soft का फुल फॉर्म है suppression of ovarian function trial. So here young patient less than 40, particularly less than 35, higher stage, who will require chemotherapy but remain premenopausal. Addition of ovarian suppression reduced recurrence substantially beyond the results seen with tamoxifen alone. So long-term survival follow-up benefit was seen with AI. एक बार सॉरी, माय इंटरनेट इज गिविंग मी ट्रबल, एक बार इंडिकेशंस दोबारा बता दोगे इसके? So premenopausal patient, especially 40 years, with an attention to 35 years, higher grade tumors who are on chemotherapy, those who have not attained menopause, meaning menopausal status, in them add some form of ovarian function suppression to tamoxifen or AI, adding suppression to endocrine therapy, there was decrease in recurrence rate, and it proved that the combination of ovarian suppression with AI had survival benefit. Do we also consider node positivity or T status in this, or is it just grade? इसमें लिखा है देखो, हायर नीचे और नीचे इधर पे क्या है साइड में ओवे ये node negative clear because see who are तुम एंडोक्राइन थेरेपी दे रही हो ना इसमें, इसलिए वो बोल रहा है. In node negative who did not receive adjuvant chemotherapy by contrast, okay, there was minimal benefit. नोड नेगेटिव पेशेंट को तुमको एंडोक्राइन थेरेपी दे रही हो. See, basically your funda of giving any form of adjuvant therapy after finishing your completion is to prevent recurrences. They said in low risk you are avoiding chemotherapy but you're giving endocrine therapy. So tamoxifen will definitely reduce ipsilateral blood recurrences and opposite side also. To this, if you add ovarian suppression, there will be additional benefit. But they also saw, since you're adding ovarian suppression, then you're guaranteed to give AI also. By giving AI with ovarian suppression, it had more benefit than giving tamoxifen with ovarian suppression. Okay. Then ये सब देखो, ये सब देखो, ये सब इम्पोर्टेंट ट्रायल्स है. पीछे आओ, ये हाँ ब्राइटनेस और ये सब. हाँ, longer term follow-up adding carboplatin. Okay, this was इसमें ट्रिपल नेगेटिव पेशेंट में हम कार्बोप्लेटिन देते हैं. आई थिंक ये वो ट्रायल है. Yeah, in TNBC they've seen that neoadjuvant. This is Gepar Picto, Gepar Quattro, Gepar Quanto, तीन है वो सारे प्लैटिनम पे, Gepar वाले सारे. मेरे को तो क्रिएटेक्स और ब्राइटनेस दो याद है. क्रिएटिक्स इसका था केप से. That is residual in TN, residual after.
ये पढ़ो ना, in ब्राइटनेस। brightness. So, chemotherapy beyond anthracycline vaccine reduce the recurrence rate in Platinum based triple negative. chemotherapy has not consistently shown to improve DFS in women who receive standard alkylator chemotherapy with cyclophosphamide as a part of anthracycline. With longer term follow up, ब्राइटनेस स्टडी सजेस्ट दैट अगर हम कार्बोप्लेटिन एंथ्रासाइक्लिन से या टैक्सीन के साथ ऐड करते हैं तो वो इम्प्रूव करता है लॉन्गर टर्म आउटकम बाय रिड्यूसिंग रिकरेंस। बट ये वाला जो चीज़ है वो सिर्फ TNBC के लिए है। तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट विद TNBC विल वारंट कीमोथेरेपी, इसलिए हम पैक्ली कार्बो जो रेजिमेंट चलता है ना वो TNBC में चलता है। बाकी सब में तो हम AC फॉलोड बाय पैक्लीटेक्सेल देते हैं, पर TNBC, हाँ TNBC में तुम क्या 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 दे रही हो? पेम्ब्रोलिजुमैब के साथ क्या क्या दे रही हो? That is in okay. The metastatic. Oh, and neoadjuvant also it was ACTC with pembro only. इसमें ना ब्राइटनेस के अलावा वो JPAR-62 भी याद रखना। JPAR-62 एक लैंडमार्क ट्रायल है कार्बोप्लेटिन का, मैं भेजती हूँ ग्रुप पे। तो पहले जो कार्बोप्लेटिन के ट्रायल्स आए थे न्यूअर्जुन में, उसमें JPAR-62 और JPAR क्वांटो ये सब है, मैं भेज देती हूँ। JPAR-62 याद रखना। ओके। In TNBC neoadjuvant it is ACTC with pembro 444 cycles only. इन नियो एडजुवेंट अभी सब चेंज हो गया है, पहले अलग अलग नहीं था। अभी पेम्ब्रोलिजुमैब वाला जो कॉन्सेप्ट है वो TNBC में आया है 522, ठीक है। और ये जो नॉर्मल HER2 पॉजिटिव वाले को हम लोग TCHP दे रहे हैं। I'll show you the trial. Which is this page? Chemotherapy. So dual blockade. So it can be in an affinity trial. It was in adjuvant only. पर इसने तो एडजुवेंट और न्यू एडजुवेंट दोनों में लिखा है। That is why I'm saying. But the trial was for adjuvant only. Okay. Then Catherine's residual post-NACT TDM1. Endocrine therapy, so ovarian suppression, SERMs, AI, SERDs. So we'll have to write about fulvestrant, progestins, and steroids, high dose estrogen, androgen, and megestrol and medroxyprogesterone. Some combinations are given. ये टारगेटेड थेरेपीज का देख लो, इसमें ट्रायल्स मेंशन है। ऊपर आओ। यही वाला से सेक्सी टूजुमैब गोविटेन, ये एंटी ट्रॉप 2 ADC,
एंटी HER2 This ADC, is all antibody drug conjugate. All are anti-HER2 only. एंटी TROP2, एंटी HER2 This और ओलापैरिब, टेजरोपैरिब। ठीक है, इधर पे कहीं तो नीचे थोड़े आराम से आओ। TDM1, क्वैकनीन, ठीक है, खत्म हो गया ना? that trial PPT you have. Trials you have that PPT with you. We can just go. तो इसमें तो सिंपल सा बात है, हमको एक आइडियल लाइन डिसाइड करनी है कि हमारा मिनिमम अफेक्टिव ट्रीटमेंट एंड मैक्सिमम आउटकम्स कैसे मिलेंगे। ठीक है, तो NSABP4 शुरू हुआ था सबसे पहले, जिसने ये बताया कि मैस्टेक्टमी सफिशिएंट। फिर मिलान 1 NSABP06 ने बताया कि हमको मैस्टेक्टमी इज़ इक्विवेलेंट टू BCS अलॉन्ग विथ RT। फिर NSABP17 तो हमने पढ़ा ही है, अभी DCIS के लिए है। 13 अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, आई हैव टू गो थ्रू। NSABP P1 जो है वो टैमॉक्सीफेन सबसे टाइम पे ऐड हुआ था, वो है। और एकोसॉक ZU10 है फॉर एक्सिलरी लिम्फ नोड डिसेक्शन। वी कैन अवॉइड एक्सिलरी लिम्फ नोड डिसेक्शन विथ RT। CALGB 9343 ये ट्रायल है कि एक 70-year-old पेशेंट NS है विथ ER/PR पॉजिटिव एंड लेस देन 2 centimeter, so we can avoid adjuvant chemotherapy for this patient. NSABP 32 क्या है? NSABP 32 सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी का ट्रायल है। NSABP ZU11 भी सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी का ट्रायल है। और एल्मेनेक ट्रायल है और एमरोस ट्रायल है कि हम एडजुवेंट RT देंगे इन प्लेस ऑफ सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी। तो क्या हम सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी को भी ओमिट कर सकते हैं? BCS अलॉन्ग विथ RT दे के ही काम चला सकते हैं। और SNFNAC एंड सेंटेना तो पोस्ट NSET के ट्रायल्स हैं। ठीक है, तो हॉलस्टेड थ्योरी क्या थी कि हम लोकल जो है ट्यूमर स्प्रेड वो लोकल रहता है और वो बाद में फैलता है, तो हम पहले मैस्टेक्टमी करेंगे। और फिशर कॉन्सेप्ट था कि एक पर्टिकुलर थ्योरी जब मोर देन 1 centimeter साइज की हो जाती है, देन इट सर्कुलेट्स इन द ब्लड एंड इट कॉजिंग ब्लड स्ट्रीम मेटास्टेसिस इन स्पाइट ऑफ बीइंग ए पर्टिकुलर साइज के बाद। तो ये सिस्टमिक थ्योरी है। तो हॉलस्टेड ने बोला कि ये लोको रीजनल थ्योरी है, हमें लोको रीजनल कंट्रोल करना है। और फिशर कॉन्सेप्ट बोला कि ये सिस्टमिक थ्योरी है, तो एक पर्टिकुलर साइज पे रीच होने के बाद वो ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है ट्यूमर और मेटास्टेसिस करने लगता है। तो हमको सिस्टमिक डिसीज के जैसा ट्रीट करना है। ठीक है, तो ब्रेस्ट कैंसर इज सिस्टमिक डिसीज फ्रॉम इट्स अर्लीस्ट स्टेजेस एंड कैन मेटास्टाइज विदाउट ऑलवेज द रीजनल लिम्फ नोड्स नहीं आएंगे, उससे पहले ही चला जाएगा, ये फिशर ने बोला। इसके बाद NSABP04 आया। NSABP04 ने क्या बोला? क्लिनिकली नोड नेगेटिव डिसीज को रैंडमाइज किया, रेडिकल मैस्टेक्टमी प्लस PMRT एंड मैस्टेक्टमी अलोन। ठीक है, तो क्लिनिकली नोड पॉजिटिव डिसीज वे रैंडमाइज टू 2 आर्म्स। तो इसने क्या बोला कि लेस एक्सटेंसिव सर्जरी विथ और विदाउट RT इज इफेक्टिव as effective as Halsted radical mastectomy। तो 25 ईयर का फॉलोअप किया इसने, रेडिकल मैस्टेक्टमी, टोटल मैस्टेक्टमी फॉलोड बाय इरेडिएशन, एंड इसने फाउंड आउट किया कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन DFS OS बिटवीन नेगेटिव पॉजिटिव एंड नोड नेगेटिव, चाहे कोई भी हो। तो रेडिकल मैस्टेक्टमी का कोई भी एडवांटेज नहीं है ओवर मैस्टेक्टमी अलोन, ये NSABP04 ने बोला। तो पहले क्या करते थे, वो रेव्स वेव्स सब निकाल देते थे, तो वो सब निकालने की ज़रूरत नहीं है, वो हॉलस्टेड करता था। हॉलस्टेड के अलावा जो नॉर्मल मैस्टेक्टमी है
वो मैस्टेक्टमी NSABP फोर्स से आई। ठीक है, तो 25 ईयर सर्वाइवल हमने एनालिसिस किया, उसमें देखा कि टोटल मैस्टेक्टमी एंड डिस्टेंस डिसीज फ्री सर्वाइवल दोनों में इक्विवेलेंट है फॉर मैस्टेक्टमी आर्म एंड रेडिकल मैस्टेक्टमी आर्म NSABP 04। तो जो पेशेंट भी नोड पॉजिटिव है या नोड नेगेटिव है उसको तुमको all patients having node positive disease invariably develop axillary nodes or axillary recurrence, तो systemic disease can spread even without axillary disease। ये भी सब NSABP 4 से ही पता चला। तो 40% of clinical node negative patient who underwent radical mastectomy had pathologically positive axillary nodes आए बाद में। तो leaving behind occult positive nodes does not always result in axillary recurrence, ऐसा इसने बोला। अब BCT इज इफेक्टिव एज द मैस्टेक्टमी। तो फर्स्ट जो 4 वाला ट्रायल था वो ये बोल रहा था कि मैस्टेक्टमी करो या रेडिकल मैस्टेक्टमी करो, तो 04 ने बोला कि हमको मैस्टेक्टमी कर सकते हैं। अब आया BCT वर्सेस मैस्टेक्टमी, तो उसका फर्स्ट ट्रायल है NSABP 06। तो 04 से हम शुरू हुए थे, 06 ने क्या बोला कि हम BCS कर सकते हैं। ठीक है, तो BCS करने के लिए फिशर एट ऑल 2002 में पब्लिश हुआ था। इस लंपेक्टमी विथ और विदाउट RT इज एज इफेक्टिव एज टोटल मैस्टेक्टमी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। तो प्रोसीजर क्या है, लंपेक्टमी प्लस RT और लंपेक्टमी ओनली। तो आपने देखा इफ लंपेक्टमी प्लस RT करा है तो इप्सिलैटरल ब्रेस्ट रिकरेंस इज 14.3% और लंपेक्टमी ओनली करा है तो recurrence of ipsilateral breast is 39.2%. It is almost double. So if we are doing lumpectomy plus RT, then there is no significant difference between total mastectomy, distance DFS and OS. So lumpectomy followed by RT is an appropriate treatment for the women with the breast cancer, provided that the margins you resected should be the free from tumor and accepted cosmetic result can be obtained. एंड उसके बाद जो रिकरेंसेस थे वो रिकरेंस जो थे वो इक्वल टू मैस्टेक्टमी आर्म्स थे। तो इसके अलावा कौन कौन से ट्रायल हैं, एक मिलान ट्रायल है, एक डच ट्रायल है और एक और 3 ट्रायल्स बोलना होता है जब हमको बोलना होता है कि NSABP 06 इज इक्वल टू ये BCS इज इक्वल टू मैस्टेक्टमी। उसका मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगी, वो सेबस्टन का टेबल है। तो addition of RT after BCS decreases the rate of local recurrence rate and NCCN guidelines ने भी बोल दिया है कि BCT is an accepted option। फिर एक आया अर्ली ब्रेस्ट कैंसर TCG मेटा एनालिसिस, significantly reduced rate of recurrence from 35% to 19% with absolute risk reduction of 15.7%। तो इसने भी ये प्रूव किया कि हम BCS कर सकते हैं RT में ऐड करते। तो local recurrence rate is a risk factor for distant meds and death and estimated that for every 4 local recurrence, 1 patient will die of breast cancer। तो more recent studies have reported lower the local recurrence rate 2% to 6% at 10-year follow-up। अब BCG offers an acceptable oncological and cosmetic outcomes। अब आ जाओ ट्रायल्स फोकसिंग ऑन DCIS, तो हमने पढ़ लिया NSABP 17 lumpectomy and radiation therapy for the treatment of intraductal breast cancer। तो नेशनल सर्जिकल एडजुवेंट ब्रेस्ट एंड बॉवल प्रोजेक्ट 17 बोलता है कि अगर हम लंपेक्टमी के बाद RT देते हैं, ठीक है, फॉर इन्वेजिव ब्रेस्ट कैंसर, तो उसका रिकरेंस रेट 3.9% है, नॉन इन्वेजिव का 8.2% है और एनी इप्सिलैटरल ब्रेस्ट ट्यूमर इज 12.1%। तो OS is equivalent in both arms if lumpectomy alone or lumpectomy followed by RT। तो use of RT following lumpectomy led to reduced rate of both subsequent invasive and non-invasive ipsilateral breast cancer tumors in when localized to DCIS। तो ये बोल रहा है कि
कितना परसेंट रिस्क इसने रिड्यूस किया? इप्सिलेटरल ब्रेस्ट ट्यूमर का 3.9% किया, नॉन इन्वेसिव का 8.2% किया, एनी इप्सिलेटरल ट्यूमर तो 8 और 3 को कंबाइन करके 12 हो गया वो। तो ओवरऑल ये सब में रिकरेंस को कम कर रहा है इफ हम आरटी को ऐड करते हैं, ऐसा इसने एनएसबीपी 17 ने बोला। फिर इसका लॉन्ग टर्म रिजल्ट जो हम पढ़ रहे थे दैट इज एनएसबीपी 24। ठीक है, तो एनएसबीपी 24 ने क्या स्टडी किया था? पोस्ट लम्पेक्टमी आरटी प्लस प्लेसिबो प्लस आरटी प्लस टेमोक्सिफेन। तो इसने बोला और टेमोक्सिफेन ऐड करने से इन्वेसिव इप्सिलेटरल ब्रेस्ट ट्यूमर रिकरेंस कम हो जाता है, लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस एक्सीलेंट आफ्टर बीसीआईएस और डीसीआईएस। तो इसने भी ये बोला है कि आरटी तो हमको देना ही है। ठीक है, तो अभी तक हमको वो ट्रायल नहीं मिला जो तो बोल रहे थे कि लो रिस्क में हम आरटी अवॉइड कर सकते हैं। तो नॉन ऑब्लिगेट प्रिकर्सर टू इन्वेसिव ब्रेस्ट कैंसर, 20 to 25% ऑफ ऑल न्यू ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोसिस जो होते हैं वो डीसीआईएस से शुरू होते हैं। 15 to 53% डीसीआईएस प्रोग्रेसिंग टू इन्वेसिव कैंसर ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years। ऑनगोइंग डिबेट रिगार्डिंग पॉसिबल ओवर, ये आ तो नहीं रहा दिव्यांग में से, क्लिनिकल कंप्लीट रिस्पॉन्स इन केस आ भी जाता है तो क्या हमको सर्जरी करने का ज़रूरत है कि नहीं है? तो इसने बोला कि ज़िंदगी भर उसको फॉलो अप करना ज़्यादा महंगा है एज़ कम्पेयर टू उसकी सर्जरी कर देना। तो ह्यूज कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ बायोप्सीज एंड सर्विलेंस, सो बेटर कि हम उसको एक्सरसाइज कर दें। तो पोटेंशियली इंक्रीज एंग्जाइटी में काउंटरैक्ट द एनी पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ सर्जिकल डी एस्केलेशन। पेशेंट पूरे टाइम डर में ही रहेगा कि भाई हम मेरे अंदर जो कैंसर है वो निकला ही नहीं है, एक बार सर्जरी हो जाएगी तो उसको ये तसल्ली रहेगी कि हमने कैंसर निकाल दिया। तो एडिक्वेट सर्जिकल मार्जिन किस ट्रायल्स ने दिए हैं? तो एसएसओ और एस्ट्रो, उसने बोला है कि मार्जिन्स आर क्लियर, मोर वाइडली क्लियर देन नो इंक नो ट्यूमर, डिड नॉट रिड्यूस द रेट ऑफ लोकल रिकरेंस एंड वेर रूटीनली नेसेसरी। तो ये मॉरन एटॉल का ट्रायल था, मॉरन एंड एमएस एटॉल, ये कोट कर देंगे। ठीक है, अमेरिकन एस्ट्रो में हुआ था। तो एस्ट्रो इज रेडिएशन ऑन्कोलॉजी कॉन्फ्रेंस, एसएसओ इज सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, बोथ आर यूएस। ठीक है, फिर ह्यूज क्लिनिकल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट, सब्सटेंशियल रैपिड डिक्रीज इन द री ऑपरेशंस बोथ री एक्सिजन एंड सब्सिक्वेंट कन्वर्जन टू मैस्टेक्टमी। तो इसने बोला कि इतने री ऑपरेशंस हो रहे तो मार्जिन्स का ध्यान रखना है और कुछ नहीं। अब ये सीपीएम क्या है भाई? कॉन्ट्रालैटरल प्रोफाइलेक्टिक मैस्टेक्टमी अवॉइडेड इन विमेन विथ एवरेज रिस्क ऑफ यूनिलैटरल ब्रेस्ट कैंसर, ये गुलियानो एटॉल ने बोला था। Despite of these contralateral mastectomy, patient of average risk have continued steadily increase from 11% to 2004 to 26% 2016। तो आपका despite of lack of cervical and psychological benefit, तो अभी कॉन्ट्रालैटरल प्रोफाइलेक्टिक मैस्टेक्टमी नहीं करनी है, इतना याद रखो। अब आ जाओ एक्जिला में। एक्सिलरी लिम्फ नोड इन्वॉल्व है, ये क्रूशियल प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है फॉर लोकल रिकरेंस एंड ओएस बोथ डायग्नोस्टिक एंड थेरापेटिक पर्पसेस। ALND इज द हिस्टोरिकल स्टैंडर्ड जिससे हाई मॉर्बिडिटी, लिम्फेडीमा, शोल्डर डिस्फंक्शन, पेन एंड पैरास्थीसिया होता था। तो अब हमको ये देखना है, पहले हमने SBBP4 में देखा कि मैस्टेक्टमी से हम आए, रेडिकल मैस्टेक्टमी से मैस्टेक्टमी में आए। SBBP06 से हम कहाँ पे आए कि हम BCS इक्वल टू मैस्टेक्टमी। अब आ गया NSABP 32 ने फर्स्ट टाइम ये बोला कि हम सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी कर सकते हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग हमारा OS and DFS। Thus, sentinel lymph node biopsy in the patient of breast cancer achieves same survival and regional control as ALND और बट विथ फ्यूअर साइड इफ़ेक्ट्स। तो इसने ब्लू डाई प्लस रेडियो ट्रेजर दोनों यूज़ किया। इसने रैंडमाइज किया सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी विथ ALND प्लस सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी अलोन। ठीक है, दोनों में 2800 पेशेंट्स थे, दोनों आर्म्स में 5600 पेशेंट्स की स्टडी की थी।
एज लेस देन 59 एंड मोर देन 50 ईयर्स, साइज लेस देन, इसका साइज का क्राइटेरिया देखो भाई, साइज इज लेस देन 2 सेंटीमीटर और 2 to 4 एंड मोर देन 4, ऐसे इसने रखा है। लंपेक्टमी वर्सेस मैस्टेक्टमी दोनों को कंपेयर किया है, ठीक है। तो अब ये जो NSBP 32 था, इसमें आप देखोगे कि लोकल रिकरेंस जो दोनों आर्म्स में है दैट इज 2.7 एंड 2.4%, डिस्टेंट मेट्स इज ऑल्सो इक्विवेलेंट। तो इन समरी NSBP 32 ने बोला SLN अगर नेगेटिव है तो SLN सर्जरी करके ही काम कर सकते हैं, देयर इज नो नीड टू गो फॉर ALND। ALND is SLN itself is an appropriate, safe and effective therapy for the patient of breast cancer, ठीक है। तो NSBP 32 क्रैग एट ऑल 2010 में लैंसेट में लॉन्च हुआ था। इसने बोला कि दोनों OS प्लस DFS दोनों इक्विवेलेंट है फॉर द पेशेंट whose size of tumor, clinical tumor size less than 2 centimeter, node negative, लेस देन 59 और मोर देन 50 ईयर्स सब लिया था इसने, ठीक है। दोनों इक्विवेलेंट है, तो अब दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो इफ़ सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी नेगेटिव है तो हमको ALND करने की ज़रूरत नहीं है। सेंटिनल लिम्फ नोड बिकेम द स्टैंडर्ड ऑफ थेरेपी ऑफ केयर। अब क्लिनिकली नोड नेगेटिव डिसीज़ है, ये तो हो ही गया है। अब हमारा क्वेश्चन है क्या हम पॉजिटिव में छोड़ सकते हैं? तो इसका ट्रायल है ECOSOC ZOO 11। मैं जू बोलती हूँ तो मुझे याद रहता है, एक्चुअली वो है 0011, पर मेरे को ECOSOC ZOO 11 याद रहता है। तो ये मल्टी सेंट्रिक नॉन इन्फियरिटी ट्रायल है, 891 पेशेंट्स में हुआ था। इसमें T1 T2 N0 इन्वेजिव ब्रेस्ट कैंसर इसने लिए है, ठीक है। 1-2 पॉजिटिव सेंटिनल लिम्फ नोड्स को रैंडमाइज किया है, उसकी कुछ पेशेंट्स की LND कर दी, कुछ की नहीं करी। तो अब इसका क्या था ना, इसने एडजुवेंट RT दी पेशेंट्स को, तो उसके RT का जो एंगल था ना वो एक्जिला कवर कर रहा था। तो ECOSOC ZOO 11 जो है गुलियानो एट ऑल है, नॉन इन्फीरियरिटी फेज 3 ट्रायल है, जिसने कंपेयर किया 890 पेशेंट को रैंडमाइज किया इनटू एक्जिला एंड नॉन एक्सिलरी डिसेक्शन एंड एक्सिलरी डिसेक्शन, मतलब SLN भी। तो इसमें SLN भी पॉजिटिव भी आया, तो उसने सर्जरी नहीं करी हाफ पेशेंट्स की, ठीक है। तो OS इन सबका कंपैरेबल था। ये भाई ये समीर क्यों आ रहा है भाई इस ग्रुप में? मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया तो फिर से आ रहा है। तुमने जो मुझे रिप्लाई किया ना ज्वाइन कर लो, वो अपना डेली वाला ग्रुप था, तो उसमें लिंक सेम है कि नहीं वो नहीं बता मेरे। लिंक सेम है, हाँ इसीलिए उसको डिलीट कर दो। मैं नहीं कर सकता ना, ठीक है। ECOSOC ZOO 11 के क्रिटिज्म क्या था इसमें, क्यों उसने बोला कि उसमें सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी पॉजिटिव आने के बाद भी ट्यूमर रिकरेंस क्यों नहीं आया? बिकॉज जो उसका RT था ना वो बहुत नॉन टेंजेंशियल RT था, उसने ऑलरेडी RT में ही एक्जिला कवर कर लिया था। तो इसलिए ये बोला कि इसके RT की डायरेक्शन के कारण ऑलरेडी एक्जिला कवर हो गया है, तो ये इसका नेगेटिव है। बट हमको ये बताना है कि हाँ सेंटिनल लिम्फ नोड पॉजिटिव अगर ट्रायल है तो उसका अगर हम नहीं भी करेंगे 1 और 2 नोड पॉजिटिव है उसको छोड़ देंगे तो भी ओवरऑल सर्वाइवल में कोई डिफरेंस नहीं है। तो सेंटिनल रेट ऑफ ALNDs इन सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी पॉजिटिव पेशेंट टू बी 85% 1 year बिफोर ZOO 11 एंड 24% 1 year आफ्टर ZOO 11। तो ZOO 11 का क्राइटेरिया जो मीट कर रहा है तो LND उसका नहीं भी करेंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है। इसमें ना एक चीज से याद रखना, हमारे यहाँ पे ना जैसे मतलब दे में आस्क सच अ क्वेश्चन इन द एग्जाम, जैसे हमारे यहाँ पे ना देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ oncosurgeons who do 2 different practices. One group sort of does कि सेंटिनल लिम्फ नोड निकाले 4 या 5 whatever and then उसको फ्रोजन सेक्शन में भेजा,
एंड उसके रिजल्ट के हिसाब से वो लोग करते हैं भाई, एक आध नोड पॉजिटिव आ गया तो भी दिक्कत नहीं है, दे विल क्लोज द एक्सिला। मेरे बॉस पर्सनली क्या करते हैं, ही टेक्स आउट 4-5 sentinel lymph nodes in a clinically negative axilla and then he does not do frozen section, he simply closes the axilla, he decides pre-operatively कि इसका axilla negative है तो उसको सिर्फ sentinel node करने का है। So in my first year I used to ask कि why do they not do frozen, so my lecturer always used to ask me कि what was the Z11 criteria. So point is we may be asked like this in our practicals if not in the theory, okay, you have a clinical scenario where the patient is a 40-year female, 3 centimeter breast lump, clinically negative axilla, you don't have frozen section with you, what will you do of the axilla? So if you say sentinel without frozen section, because a lot of institutes do frozen section, some of them don't, so you can actually say sentinel without frozen section. The justification is Z11 says that even 2 positive sentinel lymph nodes are okay in a clinically negative axilla if the patient is meeting the Z11 criteria. So Z11 criteria is this. ये basically retrospective question. प्रॉब्लम है कि वो सिर्फ ER/PR पॉजिटिव पेशेंट को ही लिया है और लेस देन 3 सेंटीमीटर, T1 T2 लेस देन 3 सेंटीमीटर। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ, मतलब if a question is asked, even in theory for that matter, 40-year female, ER/PR positive, 3 centimeter upper outer quadrant lump, clinically and radiologically axillized negative, that can just justify. तो कहने का मतलब है Z11 satisfy करता है तो we can do a sentinel provided we do a अपना ये BCS post BCS radiation that covers the axilla, जो अपने इसके अंदर PMRT के अंदर भी था ना, पोस्ट मास्टेक्टोमी RT के अंदर रीजनल नोडल irradiation to be done, Z11 ने वो टेक्निकली किया ही ना। ठीक है, तो उनके क्राइटेरिया बहुत स्ट्रिंजेंट थे, ER पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब ये आया एमरोस ट्रायल। एमरोस ट्रायल ने भी बोला कि भाई 1-2 पॉजिटिव लिम्फ नोड्स आएगा तो हम उसको क्या, टू सी द रीजनल आर्टरीज इक्विवेलेंट टू इन कंट्रोल ऑफ डिसीज कंट्रोल। तो इसने एक आर्म में LND किया, दूसरे आर्म में एक्सिलरी आर्टी दिया और इनका भी LND एंड एक्सिलरी आर्टरी दोनों कंपेरेबल है। तो अगर हम LND ना करके अगर एक्सिलरी आर्टी भी करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर इसकी क्या प्रॉब्लम है कि इसके जो लॉन्ग टर्म फॉलोअप्स में आए थे उसमें कॉन्ट्रालैटरल ब्रेस्ट में रिकरेंसेस ज़्यादा आए थे एज कंपेयर टू LND आर्म। तो at 5 years axillary recurrence was comparable to LND and lymphedema was 28% versus 14% after LND versus axillary RT। तो ये इसने तो बोल दिया, पर इसका जो लॉन्ग टर्म वाला इसमें दिया है नहीं दिया है, वो मैंने कहीं से तो डाल के लिखा था। 10 year एनालिसिस किया था तो इसमें लो AR क्या है, एक्सिलरी रिकरेंस रेट, तो वो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, वो मेरा वाला जो क्लास था ना उसने बताया था कि जो कॉन्ट्रालैटरल ब्रेस्ट कैंसर है वो फॉलोअप में ज़्यादा हुए थे एज विद एमरोस ट्रायल। तो हमको देने से पहले सोचना पड़ेगा इसको स्टैंडर्ड ऑफ केयर बनाने से पहले। ठीक है, और एमरोस ट्रायल एनरोल बोथ पार्टिसिपेंट जो BCS में गया या मैस्टेक्टमी में गया, अनलाइक ZU11 में सब mastectomy में they गए did थे not क्या? mastectomy because all did not require post mastectomy radiation। तो अब सेंटिनल नोड बायोप्सी, इसके तो ये 3 ट्रायल है ही। एकोसॉक Z071 ट्रायल, इसने बोला कि FNR हमको रिड्यूस करने के लिए डुअल ट्रेसर यूज़ करना है और मोर देन 3 लिम्फ नोड्स निकालने हैं। अगर उससे कम निकाले तो FNR मोर देन 12.6 रहेगा, 3 निकालेंगे तभी 9.1% आएगा। सेंटेना ने भी डुअल ट्रेसर यूज़ किया, इसका फॉल्स नेगेटिव रेट 8.6% है। ठीक है, तो सेंटेना के क्लिनिकली नोड नेगेटिव एंड क्लिनिकली नोड पॉजिटिव से सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी किया, पैथोलॉजिकल नोड SN या फिर PN1, तो न्यू एडजुवेंट थेरेपी दिया। न्यू एडजुवेंट थेरेपी के बाद नो एक्सिलरी डिसेक्शन फॉर PN0, जिसका पॉजिटिव था उसको सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी विद एक्सिलरी लिम्फ नोड डिसेक्शन किया आर्म B में।
और इसमें जिसमें पहले पॉजिटिव था फिर वो नेगेटिव हो गया YCN0, वो है आर्म C। एंड जिसमें अभी भी पॉजिटिव है वो है आर्म D, उसमें तो एक्सिलरी लिम्फ नोड डिसेक्शन करना ही है। तो एक तो हमारा जो अपन ने NCCN अभी पढ़ा उसने क्या बोला, पहले पॉजिटिव था पर न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी देने के बाद अगर नेगेटिव हो गया है तो हम सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी कर सकते हैं। पर अगर नेगेटिव नहीं हुआ है तो हमारा सेंटिनल नोड बायोप्सी का तो कोई कॉन्सेप्ट बचा ही नहीं, ALND करना है। ठीक है, तो इस ट्रायल ने बोला कि क्लिनिकल एक्सिलरी एग्जामिनेशन एंड एक्सिलरी अल्ट्रासाउंड टू गाइड द पेशेंट सिलेक्शन फॉर SLNB। एंड पहले अगर हमने कुछ क्लिप लगाई है पॉजिटिव नोड में तो हमको टारगेट एक्सिलरी सैम्पलिंग और क्लिप नोड निकालने में ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसने क्लिप्ड नोड और डुअल ट्रेसर लिम्फेटिक मैपिंग ये सब करा और 2 और मोर लिम्फ नोड्स निकालने हैं ये बोला। फिर एक और ट्रायल है SNFNAC जो इसने कवर नहीं किया, उसमें IHC प्लस सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी फ्रोजन सेक्शन दोनों किया है। तो उसमें SNFNAC में 2 से ज़्यादा लिम्फ नोड भी 2 के बराबर लिम्फ नोड भी 4% फॉल्स नेगेटिव रेट आ गया है, तो उसमें 2 लिम्फ नोड से ही हो जाएगा। फर्दर डी एस्केलेशन हम एक्सिलरी सर्जरी करे ही ना। अलायंस ट्रायल NSABP 51 RTOG 1304 Alliance A011202 role of ALND for the patient with a biopsy proven node positive disease T1 to T3N1 who despite of converting to node negative after NAC have a positive sentinel lymph node at surgery। तो completion ALND plus regional nodal radiation और axillary RT plus RNI। तो नो एक्सिलरी सर्जरी करो, दोनों के बराबर रिजल्ट्स है। तो अभी साउंड ट्रायल आ गया है, साउंड ट्रायल पढ़ना है। CALGB 9343 बोल रहा है कोई सर्वाइवल बेनिफिट नहीं है अमंग द पार्टिसिपेंट्स हु अंडरवेंट ALND वर्सेस नो एक्सिलरी सर्जरी, मार्जिनली हायर रिकरेंस रेट अमंग द विमेन हु डिड नॉट अंडरगो सर्जरी इवेल्युएशन। आई थिंक ये मोर देन 70 ईयर्स वाले पेशेंट्स के लिए है। CALGB 9343। तो उस पेशेंट्स को हमको मॉर्बिडिटी क्यों देनी है उसके लिए। तो अभी हमको साउंड ट्रायल पढ़ना है और कौन सा ट्रायल पढ़ना है? SLNB with surveillance by ultra एक्सिलरी सैम्पलिंग का TAD का भी ट्रायल पढ़ना है। चलो ब्रेस्ट तो ऐसा है जितना पढ़ोगे उतना ही कम।